अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद शारिक वकार और जैसे इंट्रोडक्शन मेरा दिया, आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ नस्ट 2018 बैच। आज मैं यहाँ पे जो खड़ा हूँ वो आपसे कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करने आया हूँ और वो बताने ये आया हूँ कि उनको शेयर करते हुए मैंने ज़िंदगी में पिछले 9 साल में जो अचीव किया, शायद आप में से बहुत लोगों को ना पता हो, शायद किसी को भी ना पता हो, लेकिन आई वॉन्ट टू टेल ऑल ऑफ यू वॉट डिड आई डू टू अचीव what I finally achieved in my life. Let's take a flashback. 28 September 2014, I got into NUST. बहुत जज्बाती तरीके से मेरिट पे आए, O levels, A levels में straight A's लेके आए। जब NUST में आए, although one of the best institutions in Pakistan, जब मैंने निज़ाम देखा तो I quickly told myself यहाँ नहीं सर्वाइव हो सकता, पॉसिबल नहीं है, रट्टा मारना आता नहीं है और किसी को आंखें बंद करके फॉलो करना भी नहीं कभी सीखा। आई ऑलवेज टोल्ड माई सेल्फ कुछ नया करना है पाकिस्तान के लिए, कुछ भी हो करना नया है, चाहे उसके बाद मेरी GPA 4 से 0 हो जाए, कुछ भी हो कुछ नया करना है। आई डिसाइडेड टू फॉर्म दिस टीम, जिसका शायद आपको ना पता हो अगर आपने सोशल मीडिया में फॉलो नहीं किया है, लेकिन जब मैं एक नाम लूँगा आपके सामने भी शायद आपको समझ में आ जाए। बैक इन 2021, वन ऑफ आवर मॉर्निंग शोज होस्ट्स, मुझे नहीं समझ में आ रही आप लोग क्यों हंस रहे हैं, लेकिन जी सही हंस रहे हैं। उन्होंने मुझसे सवाल किया, फॉर्मूला कार में कितने लोग बैठते हैं? और मैंने दिल में उस शो में, दिल में ऑब्वियसली सामने तो नहीं बोल सकते, मैंने सिर्फ इतना ही कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन मेरी जर्नी जो 2021 में आपने देखी स्टार्ट हुई 2014 में। रोज़ धक्के खाए, रोज़ लोगों की मिन्नतें समाजते की कि प्लीज़ स्पॉन्सर अस, स्पॉन्सर स्पॉन्सर स्पॉन्सर, वी विल पुट योर लोगो एट अ प्लेस ऑन आवर कार वेयर यू हैव नेवर सीन। पहला सवाल, फॉर्मूला इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने आए हो, बिजली है नहीं मुल्क में। हमने वहीं अपना इंजीनियर का स्विच ऑफ किया और एक BBA स्टूडेंट का स्विच ऑन किया, एंड वी टोल्ड देम बिजली तो नहीं है, सोच बड़ी है, आपकी कंपनी में बिजली बहुत है, आपकी कंपनी को नाम देना चाहते हैं। वी meandered our ways. We knew the path was difficult, but we meandered our ways so that I can achieve something big for my nation. 2 years later, we were called by US. There is an official society in the US, Formula Student, जो कि Formula 1 level की depiction student level competitions करवाती हैं. We were called by them based on our cost. वो हैरान ये हुए कि इतनी सस्ती फॉर्मूला इलेक्ट्रिक कार बना कैसे ली। We took our whole vehicle to the US, represented Pakistan, और पता नहीं कैसे, I was leading the team, पता नहीं कैसे we ended up beating MIT. अब जिस यूनिवर्सिटी में जाने का ख्वाब था उनको हरा के आ गए वहाँ से। Then we went, I personally went to their organizers, to their staff. I talked to the people of MIT, the current students of MIT in 2016. How do you guys do this? How do you have the structure to sustain whatever you do every year, every day, in and out? मुझे पता ये चला कि वो कुछ simple principles follow करते हैं, और जो मेरी यहाँ पे speech का topic भी है, how you can change your life by following simple principles and create a better future, the future we create. Number 1, I learned customer obsession is the biggest thing that any organization, individual or any company can have. For example, आप सब माशाल्लाह बहुत से डॉक्टर्स बैठे हैं यहाँ पे and about to be doctors.
Your customers are your patients. You have to understand how to deal with your patients. Sometimes you have to give good news, sometimes you have to give bad news. You can do it through statistics, you can play emotional card there, but you are the best judge of whatever you guys have to say to that patient or to the family of the patient. For example, इस यूनिवर्सिटी के फैकल्टी, इस यूनिवर्सिटी के चलाने वाले लोग, they have the customers and the customers are you, the students. It is their job. मैं सिर्फ इस यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, मैं जनरली बता रहा हूँ. It is their job to give the current students that passage where they can do similar things for Pakistan. What I've seen, I live in the US, but my story began in Pakistan. What I've seen, हम कहते रहते हैं पाकिस्तान में talent है, which I never ever can deny. The talent that this country has, no other country has it. But क्या उस raw talent को we are able to capitalize on that? Unfortunately, no. Why? The reason is we never told our audience, we never told our customers that we want to be as a company or as an individual, we want to be obsessed with you. For example, आप किसी retail shop से या किसी भी दुकान से कोई अगर article खरीद के लाएं, you want the best thing that that store has available on the shelf. You want the best one. भाई जरा वो नया वाला निकाल देना. We have to make sure as youth of Pakistan that we have that obsession with our customer. Number two, जो मैं चीज़ मैंने realize की through these years when we were making these formula electric vehicles for Pakistan, second thing that I realized was ownership. We know how to start a project. We know how to start a mission, but we do not know how to end it or when to end it. We do not know how to own it. Remember, leaders are owners. Leaders always eat last. We as youth need to understand कि जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब ना हो जाऊं, यहाँ मकसद की बात की थी, जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब ना हो जाऊं, I should never ever give up. कुछ भी हो जाए. I'm telling you this from my own personal experiences. You should never ever give up. एक दफ़ा का जिक्र है, हम क्योंकि we were making a automotive car, we went to customs in Karachi. हमारी गाड़ी के dampers आए हुए थे, dampers. We went to customs, we went to the assistant collector. वहाँ पे उनके पास हमारा आइटम था, लेकिन आपको पता है आइटम किस तरह मिलता है. So I kept on telling him, सर ये स्टूडेंट प्रोजेक्ट है, सर ये इस तरीके से प्लीज़ दे दें, प्लीज़ दे दें. नहीं बेटा आपने ये ड्यूटी नहीं भरी, आपने ये नहीं भरी, आपने ये भी भरना है, ये भी भरना है, ये भी भरना है. जेब में पैसे थे नहीं उस वक्त, क्या भरते. But I kept on going to that guy, he's a very good friend of mine now, for 4-5 straight days, कि प्लीज़ ये मैं कर रहा हूँ. मुझे उन्होंने मुझसे ये पूछा आखिर में कि क्यों करना चाहते हो ये. मैंने उनको कैंडिडली जवाब दिया ताकि सर जब मैं सीट पे बैठा हूँ तो किसी स्टूडेंट को ऐसा मौका ना मिले कि आगे मुझसे भीख मांगे और अपनी चीज़ ले जाए. ऐसा कभी वक्त ना आए किसी के ऊपर. ओनरशिप बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ में. Thirdly, hire and develop the best. As a leader, what I've personally seen in our part of the world, हम लीडर तो बन जाते हैं, लेकिन we are afraid to create more leaders. We feel that हम ही हैं बस. Remember, nothing in life is indispensable. आप replace हो सकते हैं, आप replace हो जाएंगे. आपसे पहले आगे पिछले जो गुजरे माजी में वो भी replace हुए. Always know that I have to create a second string of leadership behind me so that my affairs of the system or any organization that I'm running can run very freely. आगे बढ़ते हैं. Learn and be curious, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में खुद भी हर दिन अप्लाई किया. मुझे याद है जब मैं यूनिवर्सिटी जाता था अपनी नस्ट, I used to watch
एवरी बिल बोर्ड ऑफ कराची जो मेरे रास्ते में आता था, यार आज यहाँ से पैसे मांगूंगा, अच्छा ये वाला आइडिया इन्होंने दिया है, आज ये वाला अपनी टीम पे इम्प्लीमेंट कर देता हूँ जाके, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, फेल ही होंगे, कुछ नहीं होगा, और कोई बात नहीं, कर देते हैं। आई वॉज द ओनली पाकिस्तानी जिसने पाकिस्तान को पहली फार्मूला इलेक्ट्रिक टीम तो दी 9 साल पहले, और आज तक वो चल रही है सस्टेनेबल। बट आई वॉज द ओनली पाकिस्तानी हु टोल्ड my team that I want to give Pakistan its first female mechanical engineer who is the lead engineer of our Formula Electric team. So learn and be curious. Do not worry of asking wrong questions. No questions are wrong. जब तक पूछेंगे नहीं, failure का पता नहीं चलेगा. And जब तक fail नहीं होंगे, आगे नहीं बढ़ सकते. So always learn and ask questions, not only from your own self, but from anyone in a way that is not demeaning to the other person, but is making you yourself better every day. Lastly, insist on the highest standards. ये मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा। मैं इसको क्रिकेटिंग टर्मिनोलॉजीज में रिलेट कर देता हूँ क्योंकि वर्ल्ड कप का सीज़न है। We Pakistanis or people of this area of the world, we are very impressionable. बहुत जल्दी influence हो जाते हैं कि यार बस ये अच्छा है, ये बुरा है, ये इसने कैसे बोल दिया आज, बस ये तो हो गया आउट आज हमारी लिस्ट से, इससे बुरा इंसान दुनिया में कोई है नहीं। But we need to understand कि क्या मुझे एक वर्ल्ड कप जीतना है, अभी तो वो भी नहीं जीत रहे, क्या एक जीतना है या मुझे बहुत सारे वर्ल्ड कप आगे आने वाले 15 से 20 साल में जीतने हैं। वी ऑलवेज ट्राई टू थिंक शॉर्ट टर्म बट फेलिंग टू थिंक लॉन्ग टर्म। सो प्लीज इंश्योर वट एवर यू डू इन योर लाइफ, with your degree, with your masters, with your anything that you have yourself planned, always insist on the highest standards. The job that you have started, finish it. Finish it. एक बैट्समैन अगर 100 रन्स बना दे, सेंचुरी बना दे, and the team still loses, वो सेंचुरी कहीं काम की नहीं रहती फिर. But if a batsman scores a century and stays there till the end and takes his team home, that is when that particular batsman earns applause from the audience. So insist on the highest standards. Set yourself standards, but the highest ones. Ki yaar, this is my optimum point, but I have to go over this point in my life. I have to aim for the stars. I have to aim for at least the sky. सितारों से गिर के आसमान पे तो आएंगे at least. We have to aim for that. ये सारी चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में पर्सनली अप्लाई करी. It took me 9 years. And today, in front of you, I stand here. I am an innovation engineer at Amazon. I handle all their artificial intelligence for the Midwest region of the United States. I design their policies. I design how would you buy stuff from Amazon? How can I cajole your thoughts of buying stuff from Amazon? जितने भी principles मैंने आपको बताए, I learned from them, I applied them in my real life, and I achieved the things that I personally set goals for myself. अब इस पूरी जर्नी में क्या कोई मुश्किलात आई, क्या कोई ऐसे वाक़यात आए जिन वाक़यात ने मुझे बिल्कुल ज़मीन पे लगा दिया कि यार इसके बाद तो बैकअप है ही नहीं, इसके बाद तो उठ नहीं सकते? बिल्कुल आए. उनमें से मैं 1-2 शेयर भी कर लेता हूँ. Again, going back to the team that I designed, the first electric vehicle that I was launching, it was inaugurated by President of Pakistan. Allah उनको जन्नत नसीब करे, ममनून हुसैन साहब. He was kind enough to come to Karachi and उन्होंने inaugurate किया. तो उनका छोटा सा एक वाक़या मुझे याद आया. We were standing and we were pumped up. President of Pakistan आए, आज तो पैसे मांग के ही लेंगे. We took the curtain off. I was talking to the president. President Sahab asked,
गाड़ी में पहिए ऐसे क्यों हैं? Obviously, it was a formula car. We had tubeless tires. We had to have certain different types of tires because competitions की Formula One society की requirements हैं. I told him the same thing, but he again asked me, अच्छा ये तो ऐसे ही होते हैं. मैंने कहा जी सर ये ऐसे ही होते हैं. फिर मैंने उनसे कहा सर whatever help that you can give us will take us a long, long way. Will take all these Mazloom engineers a long, long way. He told me, चलें. चलें के बाद उनका 3 सेकंड का गैप आ गया और मेरे दिमाग में आया आज तो भाई 20 से 25 लाख रुपए हाथ में मिलेंगे. चलें के 3 सेकंड के गैप के बाद उन्होंने कहा अल्लाह आपकी मदद करे. तो फिर उनकी बात मैंने फौरन आई ग्रिप्ड दैट वेरी हार्डली. मैंने कहा अल्लाह ही मदद करेगा बस. सो आई वर्क एज एन Amazon इनोवेशन इंजीनियर, जिस तरह मैंने आपको बताया. लेकिन इन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए मैंने Amazon के अंदर भी एक ऐसी चीज़, एक ऐसी पॉलिसी Amazon को दी जो कि मुझे पर्सनली एज अ पाकिस्तानी, जिस पे मुझे बहुत फ़ख्र है, क्योंकि I've always been patriotic, always. But patriotism without application is nothing. झंडा लहराना, वो लाइट लगा लेना, वो बैज लगा लेना, वो patriotism तो है. क्या उससे वाकई आपका दुनिया में इमेज चेंज हो सकता है? I personally don't think so. It's my opinion. मैंने Amazon के अंदर रहते हुए Amazon से ये कहा कि I am a Muslim. I'm a Pakistani, I'm a proud Pakistani. I'm your innovation engineer. What I want to do in the North American region is, I want Amazon, the $1 trillion company, the biggest company of the world, to acknowledge the day to combat Islamophobia. 2 years ago. They said, why? Because I told them, Islamophobia is not my problem. Islamophobia is a global problem. And Islamophobia does not mean problem only with Muslims. Islamophobia is a problem with Christians, Jews, anyone you name it, humanity. Humanity. After a lot of struggles, after a lot of, criticism and everything from my own colleagues, I was successful enough to have this idea granted to me. I became the only Pakistani, again, who had Amazon, the $1 trillion company, celebrate or observe this day on 15th of March every year in North American region, and inshallah next year we'll be starting in Europe as well, as the day to combat Islamophobia. And lastly, last year, because of my efforts, because of whatever I gave to that community, whatever image that I represented of myself to that community, again, by following all the principles that I told you, I was named as one of the 5 best innovation engineers for Amazon worldwide. I was the only one from Pakistan, 2 from our neighboring country, India, 1 from Luxembourg, and 1 from China. But in all this circle of 9 years, one thing stayed constant, that I never gave up. I always told myself that my competition is not anybody sitting in front of me. My competition is my own self. I compete with my own self. Whenever I make mistakes, I tell myself I will not make it next time. This thing has to be in our youth today. Before I leave the stage, एक शेर पे ख़त्म करूँगा. Because I told you that innovations and all these things, the best ones, the most radical ones are the ones that can unleash the power of creativity in others. That can unleash the power of creativity in others to pursue their dreams. That is what I did, and that is what I want all of you to do. So वो शेर कुछ इस तरह से है, मैं किस तरह करूं शुमार जिंदों में उसे, मैं किस तरह करूं शुमार जिंदों में उसे,
जो सोचता भी नहीं, ख्वाब देखता भी नहीं। ख्वाब देखिए, अपने मुल्क को सर्व कीजिए, एंड डू नॉट हेजिटेट टू ब्रिंग अ चेंज, डू नॉट हेजिटेट टू मेक मिस्टेक्स. This is how you can create a better future for your own self. Thank you.